यूपीएससी का रिजल्ट आ गया और आपका नाम लिस्ट में नहीं है, कोई बात नहीं, calm down just for a minute and listen to what I'm saying. You did the right thing. आपने एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेली और आपने वो जान के खेली और आपने वो इसलिए खेली क्योंकि at this time of your life, at the time of youth, you decided to take a risk which was high risk high reward and you knew that and it was the right thing to do. अगर इंसान अपनी जवानी में ये पंगे नहीं लेगा और ये इतने बड़े मून शॉट्स नहीं लेगा तो लेगा कब? Life does not give you those opportunities. So I want you to forgive yourself. This is an important event in your life, not because of UPSC, ये एक एग्जाम है सिर्फ, but because of the value that you can give to it. बहुत देर तक आपके दिमाग में ये स्टिग्मा बन के बैठ सकता है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते. Realize this and this is the critical thing. The opportunity cost is massive if you allow it to dominate your identity. This is not a failure. This is a disqualification. A failure is you making a mistake repeatedly again and again despite knowing that you should not make it. Smoking again and again is failure. Making the same mistake without knowing, not doing the things you know you should do is failure. This is a disqualification and treat it as such. It is a relative disqualification and that is what it is. It does not have any bearing on your identity, on your personality. The only thing to be protected right now is your ego, is your self identity. उसको बचा के रखो आप, क्योंकि अगर वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई तो कोई यूपीएससी उसको रिपेयर नहीं कर सकता. That is what I wanted to tell you. Calm down. You did the right thing. It was the right game to play because you knew that the rewards were great. It's okay. Because we should understand ऐसा क्यों हुआ, हमारी कितनी गलती थी, किस कैटेगरी का डिस्क्वालिफिकेशन है. इज इट बिकॉज ऑफ समथिंग वी वर डूइंग और नॉट डूइंग? कैन इट बी फिक्स्ड? इज इट कंप्लीटली आर्बिट्ररी? आर्बिट्ररी है तो फिर वैसे भी वी कैन नॉट ब्लेम आवरसेल्व्स. एंड इफ इट इज नॉट आर्बिट्ररी एंड इट कैन बी फिक्स्ड, देन वी विल ट्राई टू फिक्स इट इफ कैन अफोर्ड टू फिक्स इट, इफ वी वांट टू फिक्स इट. दैट कम्स लेटर. व्हाट कम्स नाउ एंड द वन थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ, do it for my sake, do it for the sake of the country, do it for the sake of your parents, do it for the sake of your future self. Protect your identity and do not allow this disqualification to become a failure in your heart.